Hello students. I have one more puzzling problem for IIT IIT aspirants. Today's problem is on magnetic field and magnetic moment and torque. So many concepts will couple together. Maybe frictional force will also come into this. There are so many concepts we'll be discussing together. So the problem is something like this. It is a ball, insulator ball. Maybe it's a glass ball of radius r. It rolls down the incline. It rolls down the incline. Obviously, it has to roll down because of the friction. But what we do is, on its diameter plane, we wrap it with a wire carrying current. We wrap it with a wire carrying current, diameter plane. It's a sphere and there's a diameter like this, and this diameter I wrap it with the wire of many turns, of n turns, and then I pass current. When I pass current, this is in the magnetic field also, and there will be torque. That torque will be counter to the torque due to the frictional force. And the question is, how much current should be flowing through this current loop so that this ball does not roll down? It remains stationary on the incline. That's a question. So this question, I will write down the question. The current through the coil wound on the diameter plane of the ball, plane of the glass ball. The current through the coil wound on the diameter plane of the glass ball placed on the incline. So that it does not roll down. The magnetic field is perpendicular to the base of the incline. ये है प्रॉब्लम, यानी कि कितना करंट फ्लो करूंगा मैं इस कॉइल से ताकि इट विल नॉट रोल डाउन. सो मेनी थिंग्स आर कमिंग अप हियर. आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ो. इस क्वेश्चन को, द करंट थ्रू द कॉइल वाउंड ऑन द डायमीटर प्लेन ऑफ द ग्लास बॉल प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन सो दैट इट डज नॉट रोल डाउन. द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द इंक्लाइन. मैग्नेटिक फील्ड यूं है, वो बेस को परपेंडिकुलर, ऐसे कुछ. तो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स, किस कॉन्सेप्ट्स, विच कॉन्सेप्ट्स आर इन्वॉल्व हियर? इट शुड नॉट रोल डाउन. अच्छा, मुझे बताइए, व्हाई डज इट रोल डाउन? ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये आर है, रेडियस फ्रॉम सेंटर टू हियर, ये रेडियस है. तो देखो, पहला जो कॉन्सेप्ट इसमें आएगा वो आएगा, अ कॉइल कैरिंग करंट हैज गॉट ए मैग्नेटिक मोमेंट. वो कॉन्सेप्ट आएगा, बिकॉज व्हेन द करंट इज कॉइल इज लाइक दिस, इट कैरीज करंट, देयर इज ए मैग्नेटिक मोमेंट एज सिट विद द कॉइल. पहला कॉन्सेप्ट वही आएगा. चलो वो मैं आपको बताता हूं. अगर ये कॉइल है, इट कैरीज करंट आई, हैज रेडियस आर, तो मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में है? दैट इज, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वॉच वेयर द थंब गोज. This is the current, this is the thumb. The magnetic moment is in this direction, perpendicular to the plane of the coil. In this sense, it can be perpendicular inwards, it can be perpendicular outwards, but you have to curl your fingers in the direction of the current and watch where the thumb goes. So magnetic moment is this, of this coil.
of a single turn. If these are n turns, then the magnetic moment M is I current into area bound by this current loop. जो एक तो ये करंट है, दूसरा इसमें एरिया कितना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो अगर n टर्न्स है तो n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट, डायरेक्शन भी दिया मैंने आपको और मैग्नीट्यूड भी दिया मैग्नेटिक मोमेंट, ये वेक्टर है. अच्छा, दूसरा ये कि जब इस करंट लूप को मैं मैग्नेटिक फील्ड में डालता हूं, यह है मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट, राइट, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट. और जब मैं इस करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में डालता हूं, मैग्नेटिक फील्ड में डालता हूं, ये करंट लूप है, ठीक, मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया. तो ये जो करंट लूप है ये रोटेट करना शुरू करता है. It begins to rotate because what happens, there's a torque is acting on this current loop. Torque is acting on this current loop and it begins to rotate, and that rotation will tend to change its angular momentum because whenever there's torque there's change in angular momentum. The coil rotates. तो उसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, नंबर वन, और आखिर में रोटेशन के बाद क्या होगा इस कॉइल का वो मैं आपको बताता हूं. हैव अ लुक. ये मैग्नेटिक मोमेंट, ये डायरेक्शन है, ठीक. कहीं आपको मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन दिया होगा और आपको पता चलना चाहिए करंट लूप किस प्लेन में है. मतलब अगर ये इफ दिस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, तो करंट लूप ऐसे होना चाहिए. अगर ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट का तो करंट लूप ऐसे होना चाहिए. सो अगर मैग्नेटिक मोमेंट पता है तो करंट लूप का पता चलना चाहिए. अगर करंट लूप का पता है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी आपको पता मिलना चाहिए. तो इफ दिस इज द करंट लूप, द मैग्नेटिक मोमेंट, तो करंट लूप इस प्लेन में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस प्लेन, ठीक. तो सपोज आई प्लेस द करंट लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड. सी, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, किस ओर होना चाहिए करंट लूप, किस ओर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए करंट लूप, ऐसे, ताकि मैग्नेटिक मोमेंट यूं और करंट लूप ऐसे perpendicular to the magnetic moment. It carries current like this. Let me suppose it carries current. अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहां डाल दिया ऐसे, और इनके दरमियान एंगल थीटा है. तो क्या होगा इस करंट लूप को, इट विल टेंड टू रोटेट, it will tend to rotate so that magnetic moment aligns in the field direction. तो ऐसे कुछ रोटेट करेगा, ये यूं करेगा रोटेट, ताकि मैग्नेटिक मोमेंट जो इसका है वो फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए. तो ये ऐसे रोटेट करेगा. अगर ये करंट लूप कुछ ऐसे है, अगर ये करंट लूप यूं है, मैग्नेटिक फील्ड करंट लूप यूं है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, राइट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट लूप ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे. नहीं, करंट लूप ये है और मैग्नेटिक मोमेंट यूं, ठीक. तो मैग्नेटिक फील्ड ये, तो करंट लूप को यूं हो जाएगा, टर्न 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 लाइक दिस, एंड फाइनली इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा. इट विल ऑसिलेट फॉर ए व्हाइल एंड फाइनली इट विल अलाइन इन द फील्ड डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर ये है तो फील्ड ये है, तो इट विल अलाइन एंड इट विल बिकम लाइक दिस. सो इट विल रोटेट, यहां पर इट विल रोटेट क्लॉकवाइज, ऐसे ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और अलाइन हो जाएगा. तो वो टॉर्क कितना है, दैट इज गिवन बाय m क्रॉस b, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू mb साइन ऑफ ये एंगल जो इनके दरमियान है थीटा. तो ये है कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक मोमेंट और टॉर्क का, ये कॉन्सेप्ट है. सो व्हेन अ करंट लूप कैरिंग करंट displaces the magnetic field, it rotates, its magnetic moment finally aligns in the field direction. That's the concept. A current loop in the magnetic field. Current loop has a magnetic moment. How much current carrying in the current loop in this area enclosed? So it is I pi r square, I area. And if it is placed in the magnetic field, what will happen to the current loop? It will rotate till its magnetic moment aligns in the field direction. Right? Okay. Now, see here. Now I am prepared to solve the problem for you. Have a look. यह है फ्रिक्शनल फोर्स, यह है R. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो
टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा यूं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. हाउ मच टॉर्क द फ्रिक्शनल फोर्स विल क्रिएट? टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शनल फोर्स by frictional force. बताइए आप, everybody should give me the answer. How much is the torque produced by this frictional force about this point O, center? Yeah, about this C. C is the center. Everybody should give me the answer, F into R. This is the torque produced by the frictional force in the anti-clockwise direction. एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, अगर सिर्फ ये टॉर्क होता तो दिस टॉर्क विल प्रोड्यूस, द बॉडी विल रोल डाउन एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम विल चेंज, इट्स एंगुलर मोमेंटम विल इंक्रीज एंड इट विल रोल डाउन द इंक्लाइन freely. It will just roll down the incline because of this torque. But there is additional torque by this current. This current placed in the magnetic field. ये जो current loop है, ये इस magnetic field में है, इसका magnetic moment यूं है, और इस मैग्नेटिक मोमेंट यहां पर होने की वजह से द मैग्नेटिक मोमेंट ट्राई टू अलाइन एंड इट इज टॉर्क विल बी लाइक दिस क्लॉकवाइज बिकॉज द मैग्नेटिक मोमेंट विल ट्राई टू अलाइन अलोंग द फील्ड डायरेक्शन. ये मैग्नेटिक मोमेंट यहां आना चाहता है, सो इट विल ट्राई टू रोटेट द coil, therefore the ball, because the coil sticks to the ball, it will try to align the coil along the field direction, or it will try to rotate the ball in the opposite direction, clockwise. So what is the clockwise torque produced by the magnetic field on the current coil? Torque produced by the current carrying coil, torque produced by the magnetic field on the current carrying coil. कितना? m क्रॉस b, क्योंकि ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, m क्रॉस b, दैट इज mb sin थीटा. ये और ये टॉर्क्स अपोजिट है. इट विल ट्राई टू रोटेट द बॉल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट विल ट्राई टू रोटेट द बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अगर दो टॉर्क्स इक्वल है तो दैट मीन्स देयर विल बी नो रोटेशन ऑफ द बॉल. फॉर नो रोटेशन ऑफ द बॉल, what should we write? This is equal to this. ये इसके बराबर हमें लिखना चाहिए. ओके, फॉर नो रोटेशन ऑफ द बॉल, for no rotation of the ball, FR should be equal to MB sin theta. यह है एक इक्वेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन रोटेशन नहीं होगा. स्किड तो हो सकता है, it is not rotating now anymore, but it will slide या skid या slip down the plane. उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो हो सकता है. लेकिन उसके लिए क्या करें? ये m है ना, mg, दिस इज mg के दो कंपोनेंट, एक तो यहां से आएगा mg sin थीटा, ये दूसरा यह आएगा mg cos थीटा. इसके दो कंपोनेंट्स, इसके वेट के. For no skidding down, for no slipping down, for not accelerating downwards. इसने रोटेशन खत्म किया इस इक्वेशन ने, लेकिन अब मुझे स्किडिंग खत्म करना है, स्लिपिंग डाउन करना है. दिस फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी mg sin थीटा फॉर नो स्लिपिंग डाउन. F should be equal to mg sin theta. It should be equal to mg sin theta. तो क्या करूं मैं? शाबाश. यहां पर क्या करूं? F को क्या लिखूं? mg sin theta is equal to m b0 है यहां पर, b0 sin theta. ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया. सॉरी, oh my god, it's magnetic moment. I am so sorry, silly mistake.
M. This is magnetic moment, it is mass. They should not cancel with each other. Sin theta cancels. So it is mg is equal to m. What is magnetic moment of the coil? This coil, that is n times I pi r square. Number of turns of the coil, current into area of each turn. So B0 mg, यहाँ पर ये फ्रिक्शन है ना, R तो लिखना पड़ेगा, तो R यहाँ लिखना पड़ेगा, तो एक R इस R के साथ कैंसिल होगा. तो what is I? mg divided by, what is this? Number of turns. What is this? Pi R B0. This is the answer. This is the answer. F को हमने वैल्यू दिया mg sin थीटा, यहां पर R तो R, m B0 sin थीटा, लेकिन ये m मैग्नेटिक मोमेंट है. This m is the magnetic moment, and this magnetic moment I have substituted number of turns, current into pi r square. That is the magnetic moment of the coil having n number of turns carrying current I, and it's B0 here, the current. So what are you learning from this problem? Why it is a challenging problem? It becomes a challenging problem. See here, what is deception? If I increase theta, if I increase this theta, I will become more inclined like this. You feel it will roll down, whatever may be the magnetic field. This is your feeling. Your feeling is what? अगर आपने इंक्लाइन बढ़ा दिया, थीटा बढ़ा दिया, इसको आपने ऐसे बना दिया सपोज, तो आपको लगेगा कितना भी मैग्नेटिक फील्ड क्यों न हो, कितना भी करंट क्यों न हो, इट विल रोल डाउन. बट नो, बिकॉज करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा. थीटा कितना भी हो, कम हो, ज्यादा हो, दिस इज द कंडीशन फॉर नॉट रोलिंग डाउन. It will stay here even if you increase theta. It will stay there where it is, keeping B0 the same, M the same, current the same. It will not roll down even if you increase theta. That makes the challenging problem. You learn from here that the not slipping, not rolling down does not depend upon theta. Theta zyada se zyada ho, or bhi zyada ho. Even you make it almost vertical, it will not roll down because sin theta cancels from both sides. It does not depend upon theta. Thank you, students. I will be carrying on this problem series, challenging problem series. You will get one problem every week. Thank you.